Now, the last topic or last component of our food is water. It is the most important component of food. It is essential for life. Students, sometimes we tend to sort of overlook the fact, just like air, it is available to us very easily, just like that, we tend to think that water is not all that important. But let me tell you, water is very important. I can say you can live for few days, few months without a particular component, one or two components, but without water you can't live even for one day. Our body needs water to transport substances and nutrients inside our body. Whatever we eat, it has to be distributed throughout our body, and that is known as transport of nutrients. They have to be distributed throughout our body. It regulates the temperature of our body by sweating. Sweat, evaporation of water requires energy, and it takes energy from our body and cools down our body. Third is, it helps our body to absorb nutrients from the food we eat. Food we eat, we can't eat food which is dry. It has to be mixed with, prepared with the help of water, because from water medium our body can easily absorb nutrients. Our body needs about 2 to 3 liters of water every day. Most of the water needed by our body comes from plain drinking water. We drink water, but otherwise also beverages होती हैं जो पी जाती हैं. क्या पिया जाता है? टी, कॉफी, etc. Fruits, vegetables, meat, fish, whatever we eat, that also contains a little amount of water. That also fulfills our need for water. Provides some quantity of water to our body. Excessive or loss of water. Supposing normal functioning में जो हम whatever water we eat, we drink, and it is being again daily we are losing water through our urination, through our other sweat or other processes. But excessive loss of water from tissues of the body is called dehydration. Now remember this, dehydration is a cause of death throughout world. It is a major cause of death also. Diarrhea, vomiting and excessive bleeding. Diarrhea is loose motion जब लगते हैं, you lose lot of water. Vomiting is vomit यानी कि उल्टी आना, and sometimes bleeding हो जाती है. Bleeding due to accident हो सकती है, outside bleeding हो जाती है, internal bleeding जो उसको hemorrhage कहते हैं, तो वो भी अगर बॉडी में हो रही है तो उससे भी काफी पानी लूज हो जाता है. Dehydration causes loss of salts. प्रॉब्लम क्या है कि not only water goes out, but lot of salts are also secreted out या बाहर चले जाते हैं हमारी बॉडी से, and that leads to weakness in the body, because जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, they need salts for their proper functioning. So this leads to weakness of our body. क्या इसका इलाज क्या है? One should eat or one should drink enough water to prevent dehydration. Not only water, आप चावल का पानी, दाल का पानी, coconut oil, coconut water, or all these things, you should keep on taking a little of water so as to it does not lead to our loss of too much water. Besides this, we have one particular solution, oral rehydration solution, ORS. आपने सुना होगा students, can be used. This is available. It is available at primary health centers. जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपको ORS सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है. Even if you are not able to get it from the market, you can prepare your ORS. ORS can be prepared at home by mixing 4 spoons, 4 चम्मच आप चीनी के लीजिए, 1 spoon of salt लीजिए और 1 liter of water में उसको डिजोल्व लीजिए. Now your ORS is ready at home. Otherwise also this mixture is also available at chemist shops और जनरल जो आपकी शॉप्स हैं उनके ऊपर भी आपको ORS का सोल्यूशन मिल जाता है.
Now we have discussed all components of food. What is the balanced diet? We have a wrong conception. Most of the time we say eating more and more will lead to being our being healthy. No, this is not a correct notion. The correct thing is all the components are required in a particular amount, and that particular amount is decided by your age, your sex, type of work you are doing. So diet that contains proper amount of the essential nutrients, जो आपके 5 कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज भी एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट डिपेंड्स अपॉन सेक्स, एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मीन्स आपका जो आपका काम है, जो आप एवरीडे काम करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशन. एंड स्पेशल नीड्स. व्हाट आर दो स्पेशल नीड्स? जैसे मान लीजिए ग्रोइंग चाइल्ड जो है, जिसकी बॉडी को अभी आगे बढ़ना है, हाइट बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है, पावर बढ़ानी है, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन देन अ ग्रोन अप मैन टू डेवलप बॉडी टिश्यूज. अ प्रेग्नेंट वुमेन जो अपने अंदर एक बच्चे को पाल रही है, नीड्स मोर प्रोटीन इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी. अ नर्सिंग मदर होती है जो दूध पिलाने वाली, जो बच्चों को दूध पिलाती है मदर, उसको नर्सिंग मदर, नीड्स मोर प्रोटीन्स, calcium and vitamins to produce milk for her baby. And next is laborers, those people who do lot of hard work, physical work. In the laborers, athletes, rickshaw puller need more carbohydrate to obtain more energy to do hard physical labor. We are doing very special topic, loss of nutrients during cooking. We feel that we are eating proper diet, everything is correct in our diet, but there are certain problems during the process of eating. There may be loss of your essential vitamins and minerals, which may cause deficiency of your minerals and vitamins, because your method of preparing the food is not correct. Eating right kind of food is not enough. Why? Because the food should be cooked properly, so that the nutrients are not lost during the process of cooking. For example, if cooking is done in excess of water, काफी ज्यादा पानी लेके और and water is thrown away, थोड़ा सा पानी रखे और बाकी फेंक दिया जाता, तो उसमें जो पानी फेंका है उसके अंदर many water soluble vitamins and minerals are lost. If cooking is done at very high temperature, कई बार आप क्या करते हैं, जल्दी बनाने के चक्कर में आप लोग फास्ट गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, उसमें भी जो सर्टन प्रोटीन्स और विटामिन्स लाइक विटामिन सी आर डिस्ट्रॉयड बाय हाई टेम्परेचर. मोस्टली थिक पील्स, क्या करते हैं हम लोग, गलती क्या करते हैं, सब्जियां जब उसको छीलते हैं तो उसके थिक पील्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फ्रूट्स से भी जो बाहर का लेयर है, पल्प है, उसका जो है बाहर का आउटर लेयर, उसको रिमूव करते हैं. दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फोर्थ, वॉशिंग ऑफ सम पील. जब आपने पीलिंग मतलब उसका छिलका निकाल दिया और उसको वेजिटेबल को काट दिया, उसके बाद वॉशिंग करने पड़ते हैं, उससे मेनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर लॉस्ट. रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल एंड राइस. आई हैव टोल्ड यू, दाल और राइस के अंदर एक जो उसका एक आउटर लेयर होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको विटामिन मिलते हैं. तो अगर आप बार बार उसको वॉश करते हैं, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल एंड राइस ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स. सो बी केयरफुल. Not only you are taking proper food, but method of preparation is equally important for you to get all nutrients and vitamins and essential nutrients.